Okay. Namaste, everyone. Welcome to the Satsang in person and online. We are doing it together. So, we'll start with Om meditation as we've done last time. And then after that, probably we'll do some studies. Shweta has some 15 minutes to talk about some topic, Karma Yoga, I think. And then I'll also do some basics of Karma Yoga. And after that, we'll have some food, which you guys cannot have. I'm sorry. We can stream it still online if you want to keep watching us eat. Otherwise, we'll cut and we'll come back for some kirtan. We'll have follow that format. All right. We do have some background noise, not noise, बच्चों की आवाज आएगी. So, if we, I don't know if you've done Om meditation. It's also called traditionally Pranav Dhyan. Pranav is the name for Om. So, how we do is we take one breath and then we chant Om 5 times. Okay, one breath and then Om, 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 and that will do 11 sets. Then after that, 11 sets will chant Om, one breath, 3 times. Om, 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 and the third one will be longer. The last Om will always be longer with every set. And then the third one will do one breath, one Om. And then that will be 1:2 ratio. The O part will be 3 seconds, sort of, and the M part will be 6 seconds. Or if you want to do 4:8, it's up to you. How much ever your stamina is, we'll do that for 11. And then we'll just sit in silence after that for some time. And then we'll start our studies, okay? So everybody sit in Chin Mudra, Dhyan Mudra, Gyan Mudra, whatever you call it. Spine straight. First, observe your posture. Bring attention to your legs. Check the position of your legs. Feel the weight of your body. Feel the weight of your hands on your lap. Spine comfortably erect, not too straight, not too loose. Chin parallel to the floor. Tongue very lightly touching the upper palate behind the upper set of teeth. Jaws unclenched. And relax all the facial muscles. Consciously feel that they're all dropping down. Just let go. And bring attention to your nostril breath. Feel the cool in breath and the warm out breath. Try to make it slow, smooth, and gentle. And after your next in breath, we can start the Om chanting. 11 rounds. I'll keep the count. You just focus on the sound and the breath. Take a deep breath in. Om, 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 Om. 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 Om, 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 Om. Om, 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 Om,
O, 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 O. Last round. O, 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 O. Now three counts of Om. O, 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 last round. O, 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 one breath, one count. O, 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 O,
Last one. Oh. Sit in silence for next 1 minute. Bring your attention to your lip area and see if you're feeling the vibration still. Bring your hands together, prayer position, Namaskar Mudra. Put your chin slightly down. The moment of gratitude for this moment. Still feeling the calmness within. Say thank you to each and every energy that brought you here. A deep breath in and out. Gently rub your hands. Just press your eyes. See the depth within. See that everything is within me. I have the power to transform my life with my practices, with my sadhana. Just rub your face gently. Thank you so much. That was amazing. The vibrations. Oh, wow. Yeah. I just don't feel like talking after that, right? Yeah. So before I pass on to Shweta, she'll present her talk on Karma Yoga. I just want to make an announcement that next Sunday, 3rd of actually 3rd of November, right? Daylight saving time शुरू हो रहा है और उसी दिन I'm doing an anushthan. I started this in 2021 on the occasion of Shraddh for my father. My father passed away in 2020, so first anniversary was in 2021. I do anushthan of 1008 Mahamrityunjaya Jap. So I do that every year, and you have joined me last year, right? Some people joined last year. You joined too. Yeah, so we do that, and you can take a sankalp of doing one mala or two mala. One mala means 108, two mala 216, whatever, with an anushthan, like whatever you want to achieve. That's what I say. Get an anushthan done, and that link will be shared for those who are interested. It will be a special link, not the class link. And there'll be no sound at all. You come and go in silence, you know. Don't unmute yourself because I'll be starting when it takes me 1.5 hours. So 10 minutes for one mala I do. I don't use mala, I use my fingers. I told you finger counting how we do, right? So, but it takes me around 1.5 hours. So if you want to take a sankalp, come for full 1.5 hours, it's up to you, or come for part of it. But the Zoom link will be set up so that I'll start at 7 p.m. Sunday, okay? Because I have to coordinate with India too. So it'll be like 5:30 morning there. So it's a good time for them too. And I'll finish 7 p.m., 8:30 p.m. I'll finish. If you want to come for whatever duration, at any time, the Zoom will be set up that you can log in as the class link. Like you can come anytime and go anytime. Just keep yourself muted. And you can do that Mala Sankalp with so many people. And then it's nice. It's nice sadhana actually. After 1.5 hours, it's like your legs are numb, but you're in a very high state. That's what I feel. Yeah. So I do that every year. So you all are invited. And those who are interested can let me know. Okay. I'll send a poster for it for reminder. Okay. Ready? Pass on to you. Okay. How are you guys feeling online? You guys can introduce here to the group actually. You can come online, everybody. I mean, on camera. Unmute and talk to anybody. Everybody can sit. Yeah, that's fine.
Chandana, Bharti ji, Rashmika. Rashmika was here in person. What happened, Rashmika? You didn't come in person today? कोई नहीं, सब सो गए क्या? Yeah, I had work and Okay. just like my husband's birthday is today, so we are planning to go out. That's why I didn't commit But today. I'm glad you're Sorry. able to join online, है ना? अच्छा है. We are missing you Hi guys. Archana, Hi Bharti ji. भारती. आपको Sorry, क्या I हो can't गया? come आप on. क्यों? नहीं, मैं कैमरा में नहीं आ रही थी, मैं बाहर हूँ. Actually, in the hospital right now. So Oh, okay, okay, okay. yeah, so yeah, Everything I'll tell okay? you later. Yeah, Yeah. yeah. Just waiting Okay. for some Okay. results. So yeah, Okay. Sorry. 8 time no, में मैं कुछ सीट वेट left. yeah. Rashmika, next Thank you. time आना. Next time November में we'll do probably third or fourth Sunday or last Sunday, whichever it is. है ना? You guys are going away somewhere? November में anybody is going away? नहीं ना? No. Okay. Chandana, I'm late. So driving now to reach. Okay, that's good. You're driving. So I'll They can all see you. I can put it here. It's okay. I can see you. ध्रुवन तू કેમ ફોનમાં જોવે છે? रश्मिका मैं म्यूट कर रही हूँ तुमको. हाँ. Okay. हाँ, okay. Okay, good. Perfect. Yeah, you can speak. I think it's all set. Okay. Hi, everyone. Namaste to all. And thank you for being here. Firstly, I want to say I'm so happy we're doing our second satsang together, and it's online and in person. So very grateful for that opportunity to host here and hoping to see a lot of you in person as well. So today's topic, Karma Yoga. Write your name here. No. Perfect. All right. So today's topic, Karma Yoga. I know, Archana ji, you're going to focus on the Gita teachings, which is, kind of the source of truth and knowledge, if you will, for this topic. What I wanted to share with you all was teachings of Swami Vivekananda. So we've heard a lot about Swami Vivekananda, and I don't know how many of you have maybe read about him more deeply. But before I get into what he talks about, I just want to say there's a story about him that, strikes me a lot very often. And for those of you who may or may not know, his guru is Sri Ramakrishna Paramahansa, who was an avatar himself, someone who inspires people to fall in love with God. So he was a true bhakti yoga in that sense, with the Divine Mother, with Mother Kali, where he used to talk to her every day because he was a priest at the Dakshineshwar temple. And I remember the story where for the first 4 years of Swami Vivekananda being a disciple of his guru, he never set foot into the Kali temple, because he believed at the time he was part of the what they call the Brahmo Samaj movement, which was very focused on a more intellectual approach to life, didn't really care much for things around idol worship or even just worshiping God and things like that. So despite having a guru like Sri Ramakrishna Paramahansa, he was so convicted in his thinking that he stepped into the Kali temple. He came in front of Kali Ma and got her darshan, or was able to see her only after 4 years. So that's the task a guru like Sri Ramakrishna Paramahansa had for his disciple. But all that to say, Swami Vivekananda had that level of conviction, and with his teachings, with what he contributed to the world. I'm going to be sharing from this book. It's the first volume of a series of his talks and teachings called The Complete Works of Yoga by Swami Vivekananda. The first volume focuses on Karma Yoga. This book actually was gifted, it came through my father-in-law. My father-in-law had given it to my husband, so I'm using all these books. So all that to say, I think this edition, the first edition was in 1906.
maybe a few years. I cannot remember when Swamiji attained Samadhi, but either before, just a few years before or after. And there are three things I wanted to talk about that I thought was very relevant to all of our lives. The first one, where he focuses a lot on unselfishness being a foundation of Karma Yoga. So one of the things I took away from reading this particular section of the book was how, when we really look at all of our actions, the things we do day to day, what is the prime motive, right? Is it truly unselfish? Is it something that we aren't able to really come to terms with, to understand, okay, even if it's volunteering or doing something for others, are we truly doing it from a place of, unselfishness? And he also talks about how not to fool ourselves into thinking that we are the ones helping the world, right? He says, when you are given an opportunity to do something, one, like break the bonding of I and mine, as he says, in the mind, so that you can detach yourself from what the outcome is going to be. There is a Columbia Business School professor, I cannot remember his name, but he used to take a course, a business course that was based on the teachings of the Gita. And one of his formulas was be action oriented versus being result oriented, right? Because a lot of what we are taught in either an MBA school or at work, the focus is a lot on results. Have you attained your results? Have you achieved? But it's very less, exactly. It's very less on the actions. But when we look at our own lives, are we truly focusing on the action? So that's one of the things that really struck me. And when he says, when you're given an opportunity to do something for the world, the attitude should be that of gratitude, that, grateful that we have the opportunity to contribute. There is an example he gives. If a beggar comes to you and asking for money, you giving him money is not you helping him, but he's helping you with an opportunity to contribute to the world, because we've taken birth here, and during this time we are able to add to the positivity of the world. So that's one. The second topic I wanted to focus on was vairagya, or detachment. So to say, any action always has a good and a bad to it, right? And the example he gives is, when you shoot someone in society, that is criminal, right? Because you're killing someone. But the same gun, when used at a war to protect your country, is completely different. So it's not a matter of the object, but the intent and the situation that you're in. So really talking about, completely detach yourself from the fruits, what the result is going to be. Leave that to God. Completely surrender yourself to a higher power, God, universe, whatever you want to call it. And this is where he says a true karma yogi doesn't need to be someone who believes in God necessarily. He even comes out to say that, right? And that's where, he's so bold about it, because a lot of times this gets associated with, oh, it's just, a particular type of teaching in a specific religion, or it's God, but it's really surrendering yourself to a higher power than you. Because what he's trying to say is we are all confined in, as long as we're in time and space, and causation, as he calls it, we're all confined. We are bound by karma. So as long as we're here, we are going to be impacted by the laws, which means when you do something, there will be when there is a cause, there will be an effect. Good or bad, you have to absorb it. And that brings me to the last point I wanted to share, which he talks about freedom, that I thought was very beautiful, because I remember this saying about, the goal for yoga, or when you sit down for meditation, is not to be an expert meditator, is to be free. That is the highest goal of any yoga. So he talks about how we use karma yoga for those who are in the world, for those of us who are, doing jobs day to day, who have a family life, who have kids, who have all of these other responsibilities, duties. Use this as a vehicle. Do your duty or whatever, your obligations with love, so that it greases the wheels, as he says.
all that to say, that is the only way to attain freedom from it. Of course, easier said than done. But the beauty of Swami Vivekananda's teachings, what I found is very practical. And I have actually collected excerpts from the book. I've created a 6 to 7 page document, which I will share with the group on WhatsApp. Because it's very practical in the sense he talks about start practicing. He even details, every day, take an activity and think about, okay, why am I doing this? Take an activity and think about, am I attached to the results? And keep reorienting yourself to the present moment. He says it's a practice. It's a practice. You have to keep practicing it every day. So I just wanted to share that with everyone, and I will share the document as well. But yeah, I would love to hear any questions, thoughts, comments, anything else this has brought up for you as you kind of listened in. Sorry, go on. No. Please. No, I was just going to say, Archana, you have some. No, No, please. that was just very beautiful. I know, exactly, yeah. Yeah. Go ahead. No, very well said. I think it captures a lot of the karma, right? You talk about three things. I think it was selflessness, detachment or vairagi. Yeah. And the third is Freedom, yeah. Yeah. So question then, I totally appreciate rehearing it, and hopefully I can make this part of my daily practice and daily ritual. कि करो दूसरों के लिए करो without any expectations, right? It's like the beggar example. It's Yeah. money. What if somebody is asking you for something that is against your principles, against your dharma? How do you deal with that situation? Repeat the question here because the Yeah. So the question is, when we are acting selflessly, what if someone is asking us to act in a way that goes beyond My the dharma? yeah. Yeah, And dharma is individually independent Correct. to everybody, right? Everybody has their own Correct. dharma. correct. So my perspective is the dharma, again, depends. It's also a very subjective thing for every individual in every situation, in every Yeah. country or whatever, right? And again, I go back to the teachings that I read. I think at the end of the day, whatever you do, there's two, at least the way I see it, there's two types. One is a worldly way of doing things, and another is, I would say, a God word, or like, the more, karmic, exactly, dharmic. So I think at the end of the day, I'm going to again provide my perspective from a very practical standpoint. If you have certain boundaries and if you have a certain way of functioning, and that is what will keep you going, anyone asking you to act outside of that, I think, is something you need to first look at, protecting what you can do, right? Because at the end of the day, for you to contribute to the world, you need to be whole. So if I have to do this at the cost of someone, to me, practically, that's not a sustainable approach. There are times where we go above and beyond for others, which all of us have done. But I think it's always good to take stock of where you can cross that boundary, where you're okay doing that, and where you're not. I will say this is very different from what Swamiji had written, where he says others come first and you come last, which philosophically, yes, I think that's the highest. But if I understood your question correctly, No, I think in the practical world today, yeah. And the reason I asked this question is Yeah. that if I act in a way that supports my dharma, my boundaries, Yes. then are you being selfish? Yeah. Right? And essentially, your dharma is one that's not just self-serving, Yes. right? Of course, it has to Yeah. be So it has, humanitarian. your dharma is essentially something that is not completely self-serving. And I think what I was speaking also was more around boundaries in general, Yes. because sometimes when we think of dharma and what we define as dharma in our lives today includes what we consider boundaries. And a lot of time, boundaries are to also protect you, the jiva that's in you, to go out and do things in the world. So that is my perspective, but yeah, open to seeing. I've actually thought about this, and I've come to conclusion of two things when dharma ke baare mein, because dharma has to be Mhm. broader and we can chat later. The two things that I try to keep in mind now is transparency and authenticity. Yes. You have to be transparent so that people know your boundaries, and you have to be authentic.
Yeah. And transparency depends on what the other person is able to listen to and comprehend. So transparency can be a bit loose, but authenticity has to be being genuine. Right. Authenticity is important. Transparency can be dependent on the person. Yeah. Any more questions? Thank you. No, no questions. But I was also thinking, how Archana, when you talk about I think it was Geeta when you were talking about how everything has to be the least harm or So something. I'm going to teach that now. Okay, sounds good. Okay, because that's what first came to mind when you Yes. said that. But what I really love these, three, I'm almost like pillars Yeah. if you think about and how you can, for me, I think freedom resonates the most because I feel like that's something that it's always held me back in a way that I never felt I was free, and I always had these attachments to things. And so that's something I'm going to be continuously working towards. And that's really brought a huge change in how I see the world. And I feel very much happy and content with that freedom because I feel like I have the freedom. I can make the choice. And So you can I do the didn't know yoga that teachers before. training course now, right? Yeah. Yeah. No, I didn't know that before. I didn't feel that I had the ability to be free, but I feel like it is within me. And now I've found it, Good. Yeah. finding it. Yeah. Any comments? No, I just have a question. Can you elaborate what is karma yoga? Like, I know you said like these Yeah. are the Very important. Yeah, I think for that specific one, let's go through the Gita teaching. I just want to इसके पहले बहुत सारे टर्म्स समझने हैं, हाँ, है ना? ऐसे नहीं समझ में आता कर्मयोग. हाँ, Yeah. You want to say? I just wanted to give a small example that I read in the book around attachment, where Swamiji says a person who has left everything in the world and gone to the desert may be the most attached person because he is now only focused on all he has is the body, and he is now only focused on keeping that body going. So he's going to be very attached to the body versus someone who does not need to hyper focus on something like that. So all that to say, it's again a thing of the mind. It's not to it's being a karma yogi and some of these principles that we talk about, it's more interior than exterior. Yeah. I just thought that example was very interesting because a lot of times going away from society and going and living somewhere else is always considered the path to detachment. Just discuss the that. same Yeah, as the exactly. monk and Yeah, the exactly. realistic- Exactly, right? So I thought it was very interesting when I was reading that. But yeah, that's it. Thank you. Yeah, And thank you when so we much. were talking about monk Mhm. can also have those So things. attachment को word replace करना है dependency से. Okay? That's a better word. So that you know you're dependent on something. Don't use the word attachment क्योंकि वो बहुत लोग love से confuse कर जाते हैं. Start using dependency. Am I dependent on this or that or this person or that person? That's a much better word. Okay? Where is my dependency? Okay? I'm not talking कि grocery store पे dependency है वो सब नहीं. वो तो रहेगा हमेशा क्योंकि वो चाहिए हमको. So I have prepared some notes actually to study, understand systematically what is Karma Yoga. So उसके लिए मैंने notes prepare किया है and then we'll go over terms so because इनको confusion हटाना है, right? सारे से तो Karma Yoga is a part of sadhana जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ मैं. Everybody understands हिंदी ना, like अगर कोई शब्द समझ नहीं आता मुझे टोक देना क्योंकि मेरी एक बंगाली फ्रेंड थी, वो बोलती थी अर्चना के साथ बात करते समय मुझे डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ेगी क्योंकि when I go sometimes I go very deep Hindi. So, all right, let me just minimize this. Oh, you can minimize. Okay, that's fine. So, sadhana, matlab kya? Sadhana means actions. It's nothing but actions. Whatever you're doing every day is an action. So, that is what is sadhana. Karma yoga ka aisa definition hai for beginners. So, every action should become a practice towards karma yoga. वो कैसे ट्रांसफॉर्म करना है उसका पूरा समझ is karma to going towards that process. That doesn't mean you will become karma yogi as soon as you start practicing those things because karma yogi is the highest stage, okay, who's always in connection, okay, with the divine. That's karma yogi. But we can definitely start the process by inculcating those principles in no matter what we do within our roles. तो वो कर्म योगा का वो सीखना पड़ता है, वो समझना पड़ता है. कर्म yoga has nothing to do with action, as she said, because if I tell you that somebody is taking a knife and putting a incision in the chest every day, going in doing this to multiple people, it may not be wrong because that person might be a heart surgeon. Okay, so intent behind the action itself is neutral.
एक्शन अपने आप में कुछ खराब नहीं होता, उसके पीछे इंटेंशन जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई मुझे बोले हाँ घर आइए, चलिए खाना खाते हैं, ये करते हैं, बट अंदर में कुछ और सोच रहे हैं वो, तो दैट इज योर कर्म, दैट इज मेकिंग योर कर्म एक्चुअली। ओके, तो वो समझने वाली बात है। तो कर्म एज अ साधना एंड जनरल कर्म में ये फर्क है। जनरल कर्म तो हम सब करते ही रहते हैं, एज अ मदर, फादर, एज अ एम्प्लॉय कर्म करते रहते हैं, बट वो साधना कैसे बनेगी उसको समझना है। उसके लिए कुछ टर्म्स मैं समझाऊंगी कि इसमें जो भी आप कर्म करते हैं उसमें अनुभव कहाँ होता है, मन में होता है, शरीर में होता है ना। तो ये मन के लेवल पे जो एटीट्यूड है उसका चेंज ही आपको कर्मयोग की तरफ लेके जाएगा। मन पे जैसे हम बोलते हैं ना, अरे मुझे ये करना है, वो करना है, टू डू दिस टास्क दैट टास्क, वो बंधन क्रिएट करता है। वेराज अगर एटीट्यूड जो हम चेंज करेंगे उसमें कर्मयोग के प्रिंसिपल्स आएंगे तो वो साधना बन जाएगी, वो कर्म नहीं रहेगा। दैट इज नॉट योर चोर एनी मोर। वेदर यू आर मॉपिंग योर फ्लोर, डूइंग योर लॉन्ड्री, डिशेज, या टेकिंग केयर ऑफ ए चाइल्ड, दैट बिकम्स कर्मयोग। ओके, तो क्योंकि कोई भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका टाइम लिमिट होता है ना, टाइम लिमिटेशन होता है। जैसे कुछ भी कर रहे हैं, जैसे लॉन्ड्री किए उसका फल आया, मतलब कपड़े साफ हो गए, खाना बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं मतलब खाना बन गया। हर का एक एक्शन का एक फल होता है। ओके, every action that you do has a phal, so that you have to remember. But if action done with karma yoga, that phal may not affect you mentally. हुआ हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ओके, वो एक एटीट्यूड है, ठीक है, वो हम सब देखेंगे। तो कर्म फल का जो ऋषियों ने बोला है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले बताया, इट्स टाइम लिमिटेड, इट कैन गिव यू सुख एंड दुख बोथ। एंड थर्ड थिंग इज डिपेंडेंट ऑन समबडी और समथिंग टू बी डन। कर्म योगी ये सबसे ऊपर होता है, मतलब वो एक्शन का सुख या दुख आएगा वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। उसका जो ये होगा, डिपेंडेंसी होगा, वो भी चला जाएगा। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस, है ना। इसका मतलब ये नहीं है, लोग बहुत बार ये समझ लेते हैं कि योगी को, लोग बोलते हैं ना कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, ये बहुत कॉमन ये है। इट्स अ मिसकंसेप्शन। फल की चिंता एक्चुअली नहीं करनी है, बट ऐसा नहीं है कि आप वो फल के बारे में सोचो नहीं, क्योंकि अगर गोल नहीं रहेगा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। कोई गोल लेके ही हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट उसकी चिंता करते रहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो करना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप कर्मयोगी बनना चाहते हैं, उसका मैंने एक टर्म यूज किया था, आवृत्त चक्षु। याद है किसी को वो टर्म, आवृत्त चक्षु? टर्निंग इनवर्ड। चक्षु मीन्स आईज, आवृत्त मीन्स सर्कल बैक। So when you start circling back on your own self, how am I feeling while doing this? Okay, that is the beginning of Karma Yoga. When you start bringing attention here, rather than what I am doing for others. तो वो सिर्फ कर्म होता है, तो उसका आप डिपेंडेंसी हो जाता है फल पे। बट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग हाउ एम आई फीलिंग वाइल डूइंग दिस, ओके, उस पे ध्यान रखना है। तो कर्म को बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे शास्त्र में। तो एक कर्म का डेफिनेशन है, कर्म इज ओनली बिकम्स कर्म योग या फिर धर्म जब वो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों होता है। अभ्युदय क्या होता है? मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। एंड निःश्रेयस क्या होता है? इनर प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। जब दोनों हमारे कर्म में दोनों समृद्धि होती है, लाइक प्रॉस्पेरिटी विद इन एंड प्रॉस्पेरिटी आउटसाइड, देन दैट इज धर्म, दैट इज प्रॉपर। ओके, तो ये एक धर्म का डेफिनेशन है कि देन ओनली इट्स धर्म। ओके, इफ समबडी इज जस्ट डूइंग देयर इनर सब, बाहर क्या हो रहा है, बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देगा, तो दैट इज अधर्म। ठीक है, उसी तरह बाहर बहुत अचीव कर रहे हो, यू आर गेटिंग ऑल द प्रॉस्पेरिटी आउटसाइड बट यू आर नॉट वर्किंग इनवर्ड, that will lead to addiction, which we are seeing in the society these days. That's also a dharma. So dharma is a combination of inner prosperity and outer prosperity both. तो उस हिसाब से अगर आप कर्म करोगे तो that will take you towards कर्म, becoming a कर्म योगी, निःश्रेयस एंड अभ्युदय। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल अगर अगर हम सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा कुछ भी पढ़ाई कर ले, कहीं भी स्कूल चला जाए, अल्टीमेट तो ये उसका गोल है मोक्ष। अगर मान लो हम ऐसा एज अ मदर सोच लेते हैं और हम उसको कुछ नहीं करते पढ़ाई लिखाई में, मोक्ष ही लेना, तो क्यों ये सब पढ़ाई लिखाई करना है? तो फिर आर यू डूइंग अधार्मिक जॉब, राइट? एज अ मदर यू आर। जैसे आपको कोई मतलब ही नहीं है बच्चा क्या पढ़ाई करे, कहीं भी पढ़ ले। लेकिन अगर इफ यू आर डूइंग 100% व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड एट दैट मोमेंट, okay, even though you know the goal is moksha, the process लेकिन उसके थ्रू आप जा रहे हो, whatever is required for abhyuday, like prosperity in the worldly matters, you must, okay, that is धर्म। okay, धर्म का एक ये डेफिनेशन है। दूसरा धर्म का डेफिनेशन दिया हुआ है, धार्यते इति धर्मः। ध वर्ड से समझते हैं, जैसे धरती का भी रूट वर्ड ध होता है, धनुष का भी ध होता है। तो जो भी कोई चीज को होल्ड करता है ना, वो धारता है उसको। जैसे हम धारण करना भी बोलते हैं ना, Yeah. अपहोल्डिंग समथिंग।
Hi, Chandana. Chandana is here. Welcome. She's my friend and long-standing participant of Mokshadham behind the camera. Okay. So coming back to धार्यते इति धर्मः, मतलब जो किसी का एसेंस होता है, जैसे उसको होल्ड करता है वो चीज, उसको धर्म बोलते हैं। जैसे आग का धर्म क्या है? आग किस चीज को धारण करता है? आग, हीट को। ठंडी आग तो नहीं सुनी ना आपने? हीट इज द एसेंस ऑफ आग। ओके, उसका धर्म है। आग का धर्म क्या है? गर्मी, हीट। उसी तरह धरती का धर्म है हमको होल्ड करना। माँ का धर्म क्या है? बच्चों का लव, केयर, गाइडेंस, ये सब पेरेंट का धर्म जो होता है। उसी तरह एक राजा का धर्म क्या है? प्रजा को पिता की तरह पालन करना, और राजा का धर्म है। तो पॉलिटिशियंस आजकल तो वैसा करते नहीं है। सारे अधार्मिक ही है मोस्टली, हाँ, अनलेस दे आर धार्मिक पॉलिटिशियंस। आजकल क्या हो रहा है जीटीए में तो सबको पता है। नो, Fortunately, not now, but it eventually they will. We'll create one. Ramchandra. हाँ, रामचंद्र वास. No, our kids will become. If you are yogis, karma yogis, your kid will become dharmic politicians, right? Why not? We should have that hope. तो धार्यते इति धर्म, जो जिसका होल्ड करता है, तो सोसाइटी को होल्ड क्या करता है? धर्म होल्ड करता है। उसी से एक ये है। अब एक्शंस है, कमिंग बैक टू एक्शन, धर्म इज ऑलवेज एन एक्शन। ओके, तो एक और डेफिनेशन धर्म का, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा डजंट मीन नॉन वायलेंस, वो गलत डेफिनेशन है। ये मैंने बहुत बार बोला, अहिंसा मीन्स पाथ ऑफ लीस्ट हार्म। ओके, जैसे कोई भी सिचुएशन में अगर आपके वो, जैसे आपने वो क्वेश्चन पूछा, अगर आपको वो उस पर्सन को वो चीज ग्रांट कर देते हैं तो उसमें हार्म होता है, या होल्ड करते हैं उसमें हार्म होता है? समझ में आ रहा है? कोई आपसे कुछ मांग रहा है, somebody is expecting something from you, उसमें हार्म किसमें होता है? जो पाथ ऑफ लीस्ट हार्म है वही लेना है। अगेन, ईगो स्टैंड पॉइंट से नहीं सोचना है कि मेरा इसमें क्या फायदा है, समष्टि के लिए सोचना है। समष्टि मतलब सबके लिए, जो सबके लिए इसमें सबका फायदा है वो सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने बच्चों को, आई मेड श्योर दे लर्न हिंदी, नॉट बिकॉज इट्स माई मदर टंग, आई वॉन्टेड टू दैट, बिकॉज इफ आई वॉन्टेड दैट वुड बी एन ईगो स्टैंड पॉइंट कि मेरा मदर टंग है, बच्चों को सीखना है। आई वॉन्टेड देम टू लर्न हिंदी एंड ऑल्सो शुद्ध हिंदी, बिकॉज हिंदी इज वेरी क्लोज टू संस्कृत। इफ कल को 40 साल बाद वो अपना भगवत गीता पढ़ना चाहते होंगे तो दे कैन इजिली लर्न संस्कृत। तो दैट वाज माय इंटेंशन बिहाइंड टीचिंग देम हिंदी, यू अंडरस्टैंड? सो श्रेयस वर्सेस प्रेयस का हमेशा ध्यान रखना है। श्रेयस मतलब जो सबके लिए अच्छा है, प्रेयस मतलब जो मुझे प्रिय है। उसका समझ कैसे आएगा? थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अपने स्टैंड पॉइंट से सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे हिंदी सीखना है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि समाज के लिए क्या अच्छा है। ऐसे धार्मिक बच्चे बनेंगे जो भगवत गीता पढ़ के बड़े होंगे, तो वोंट दे बी अ गुड, स्प्रेड करेंगे नॉलेज, वोंट दे बी अ गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि हमारे गुरु ने और ऋषियों ने क्या बोला था? वसुधैव कुटुंबकम। हमको वसुधा के बारे में सोचना है ना पूरे। तो ग्लोबल पिक्चर में आप जो एक्शन ले रहे हो वो क्या कंट्रीब्यूट करना है ग्लोब पे, उसका हमेशा ध्यान रखना है। एक का इंग्लिश में भी कहावत है ना, व्हेन अ बटरफ्लाई फ्लैप्स इट विंग, ऐसा कुछ है ना, सुना है किसी ने? Yeah. Butterfly flaps a wing, it's a hurricane, some other part of the world. या इफ अ बटरफ्लाई फ्लैप्स अ विंग देयर इज अ हरिकेन इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक छोटा एक्शन जो कोई कर रहा है वो कहीं बड़ा भी मैनिफेस्ट हो सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है। तो ऐसा कभी छोटे बुद्धि से नहीं सोचना है कि मैं क्या करूं, कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, है ना। लोग यूजुअली बहुत लिमिटेड सोचते हैं, बहुत उस लिमिटेड स्टैंड पॉइंट से नहीं सोचना है। सोचना है कि समष्टि के लिए क्या है, पूरे विश्व के लिए मैं जो कर रही हूँ वो किस तरह से, हर कोई एक्शन मेरा सोचना भी कैसे अफेक्ट कर सकता है। जैसे एक बहुत कॉमन सोच है इंडियन सोसाइटी में, माई हस्बैंड इज वेरी हेल्पफुल। बहुत लोग के मुंह से मैंने सुना है, जबकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। हस्बैंड कभी नहीं बोलता माई वाइफ इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज शी अर्न्स। क्यों? क्योंकि हमने वैसे सोच बना के रखी अपने बारे में। आई ट्राई टू ब्रेक दिस पैटर्न ऑफ वुमेन टू थिंक लाइक दैट, राइट? वो सेल्फ लिमिटिंग है। जब आप गृहस्थ जीवन में आए हैं तो दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, जो 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 कर सके। तो ऐसा सोच के अपने बारे में ये करना, खुश होना कि मेरा बड़ा हेल्पफुल हस्बैंड हो, कहाँ का गुमान है, यू नो, इट्स लाइक फीडिंग योर ईगो ओनली, राइट? तो इसीलिए थॉट्स भी दूसरे का चेंज करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक दिया से ही दूसरा दिया जलता है। एंड आई फील लाइक मैं तो क्रांतिकारी हूँ। अभी मैं स्टोरी सुना रही थी मेरे पुलिस ऑफिसर से इंटरेक्शन के। पुलिस ऑफिसर को ही बदल देती थी मैं रास्ते पे। एनीवे,
मेरे 3-4 पुलिस इंटरेक्शंस हुआ, एक बार पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया मुझे। Because she jumped. एक बार तो मैंने यू टर्न ले लिया था, मुझे दिखा नहीं था, तो नो यू टर्न के सेम पे यू टर्न ले लिया था। तो मेरा एक पेशेंट था, पुलिस ऑफिसर, बहुत अच्छा था वो, यही का गोरा ही था, टोरंटो पुलिस में काम करता था। तो बोलता था, अर्चना, व्हेनेवर अ पुलिस ऑफिसर कैचेस यू, सबसे पहले गिव अ नाइस स्माइल एंड से सॉरी, बिकॉज दे आर ऑल्सो अफ्रेड कि कौन क्रिमिनल तो नहीं है, बिकॉज दे डील विद क्रिमिनल्स ऑल डे, और आजकल तो और भी कैनबिस कौन हाई है क्या नहीं है। देन ही स्टॉप मी एंड देन आई वाज जस्ट गेटिंग ऑफ माई मैट लीव, और मैंने बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं किया था, तो मुझे इतना कुछ याद नहीं था कहाँ यू टर्न है क्या नहीं। तो ही सेड, आई एम सो सॉरी, आई सेड, आई एम सो सॉरी ऑफिसर, व्हाट डिड आई डू? नो नो, ही आस्क्ड मी कि डू यू नो व्हाट यू डिड? तो मैंने बोला कि ओ आई नो, आई डिडंट रिन्यू माय स्टिकर। he said no, I didn't even see that. You took a U-turn, we're not, you're supposed to take a U-turn. मैंने बोला धत तेरी के, मैंने खुद से ही दूसरा पॉइंट बता दिया। फिर मैंने बोला ओके, सो आई हैव टू ऑफेंसेस नाउ, यू नो द अदर वन, सो tell me which doesn't have a point, because I don't want to increase my insurance. I'll go with one with the fine but not with the points, please help me. मैंने उसके ऊपर ही डाल दिया। अभी ball is in his court. I tap into human into every profession, है ना? तो मैं अपने मैनेजर लोग से भी ऐसे ही बात करती हूँ, डायरेक्टर से भी ऐसे ही बात करती हूँ। बिकॉज एवरीबडी अल्टीमेटली हैज अ माइंड एंड अ ह्यूमन बीइंग इनसाइड, राइट? तो मैं वैसे कनेक्ट करती हूँ, तो पुलिस अफसर से भी मैंने वैसे ही कनेक्ट किया। फिर वो बोलता है कि इसका, उसने मुझे बताया इतना इसके इतना पॉइंट है, इसका इतना फाइन है। मैंने बोला मुझे फाइन दे दो, मैं जज के पास जाके फाइन हाफ करा लूंगी। तो बोलता है वेरी स्मार्ट, उसने भी लिख के दे दिया। ओह माय गॉड, तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे 2-3 और किस्से बाद में नेक्स्ट सत्संग में। हाँ, लेट्स कम बैक टू डेफिनेशन ऑफ धर्म। तो पहला डेफिनेशन हमने किया, अभ्युदय और निश्रेयस, एनी कर्म विच contributes both towards spiritual progress and material progress is dharma. Second is धार्यते इति धर्म, which sustains everybody, is धर्म। अहिंसा परमो धर्म, path of least harm। धर्मो रक्षित रक्षति रक्षितः, मतलब आप ये सब करेंगे तो धर्म की आप रक्षा करेंगे, तो वो धर्म आपकी बाद में रक्षा करेगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आपका धर्म है अपने बॉडी का ध्यान रखना, वो प्रॉपर्टी, पहला धर्म मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट्स योर फर्स्ट ड्यूटी। अगर लिटरली ड्यूटी जैसा समझे हम धर्म को, तो अगर आप धर्म में रह के अपने बॉडी का देखभाल करेंगे, तो वो बॉडी आपको बाद में प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, बुढ़ापे में? ठीक है। आप बच्चों को धार्मिक तरीके से पालेंगे, तो आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी आपको धार्मिक तरीके से रखेंगे एज अ ओल्ड पेरेंट्स। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू रिलीजन, उस पर भी मैं बात करूंगी थोड़ी देर में। दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम क्या मन में हमारे गलत फैला हुआ है रिलीजन को लेके। तो 2 मार्ग होते हैं हमारे ऋषियों ने दिया है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ओके, प्रवृत्ति मार्ग मतलब होता है जो हम गृहस्थ मार्ग में रहते हैं उसको प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि हम सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं, को माइंड बहुत यूज करना पड़ता है, इंटेलेक्ट यूज करना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, मर्यादा का पालन करना पड़ता है ना, बाउंड्रीज देखना पड़ता है। बट हमारे ऋषि ने बोला कि इसी प्रवृत्ति मार्ग में धर्म के रास्ते पे अगर चलना है, और एक्सेसिव भोग मतलब अननेसेसरी इंजॉयमेंट, सेंसरी इंजॉयमेंट को अगर हम त्याग करते हुए, अगर हम जो हमारे गुरुओं ने सिखाया उस परंपरा के अनुसार भजन करते हुए लाइफ जीते हैं, तो हम कर्मयोगी बन सकते हैं। एंड अल्टीमेट फल ऑफ बीइंग कर्मयोगी इज मोक्ष। ओके, दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या होता है, जहाँ आचार्य गुरु शिष्य परंपरा से आप जो नॉर्मल गृहस्थ मार्ग का त्याग कर देते हैं, और आप ऑरेंज या जो भी कलर उनके जो गुरु के हिसाब से परंपरा के हिसाब से होती है आचार्य, उनको 100% समर्पित करके भजन करते हैं, उपासना शिक्षा उसमें ही आप लिप्त रहते हैं, संसार में आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो और आपका ये भी काम है कि आप गृहस्थ मार्ग वालों का मार्गदर्शन करें, दैट्स वन ऑफ द ड्यूटीज गिवन टू निवृत्ति मार्ग, साधु मार्ग का। तो दैट इज वन पाथ, उसमें वो टोटल। लेकिन निवृत्ति मार्ग हमारे इसमें इतना प्रमोट नहीं किया जाता था। दे सेड यू हैव टू गो थ्रू द गृहस्थ मार्ग अनलेस यू आर सो मैच्योर, लाइक सम शंकराचार्य, कोई और जो बचपन से एकदम क्लियर है, बहुत होते हैं, then only nivritti marg is good for you. Otherwise, if you come in the nivritti marg without being mentally mature, your vasanas are still there. Vasanas are deep-seated emotions and tendencies and desires that will manifest even in your sadhu vesh, जो कि होता है स्कैम्स आजकल, है ना?
तो you have to be very careful. And I say Grihast Jivan is easy for sadhana, easiest for sadhana, because it's like a womb of a mother, you know. It helps you grow. इतने इंटरेक्शंस होते हैं हमारे माइंड से। और दूसरा, हमारी टेंडेंसी वासना को एग्जॉस्ट करने का मार्ग भी मिलता है। जैसे हमको किसी पे प्रेम आया, हमने किसी को हग कर लिया, हमको गुस्सा आया, हम चिल्ला दिए, हम लोग ने सड़क पे खड़े होके पानी पूरी भी खा ली, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक साधु करेगा तो पेपर में न्यूज आ जाएगा, है ना। तो हमको वासनास को एग्जॉस्ट करने का एवेन्यूज भी मिलता है गृहस्थ मार्ग में। हम मन हुआ वेकेशन पे चले गए, मन हुआ भजन कर लिए। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली। इट्स एन इजी वे टू एग्जॉस्ट योर टेंडेंसीज। एक्चुअली टेंडेंसीज एग्जॉस्ट करना है माइंड का, फ्रॉम तमस टू रजस टू सत्व। सबको पता है ना बेसिक तमस सत्व रजस। तमस इज डलनेस और नेगेटिविटी ऑफ द माइंड। ओवरऑल बताती हूँ। जैसे तमस भी इंपॉर्टेंट है सोने के समय, यू नीड दैट डलनेस, बट तमस कैन ऑल्सो मीन नेगेटिविटी और क्रिमिनल माइंड। ओके, तामसिक, तमस इज वर्ड फ्रॉम हीट। ओके, तमस वो उससे आता है। रजस होता है, मेजोरिटी ऑफ अस आर वेरी राजसिक, जैसे एक्टिविटी ओरिएंटेड, ये करना है वो करना है, गोल्स अचीव करना है, वो राजसिक टेंडेंसी होती है। सत्व इज प्योरिटी, जैसे आपका ज्यादा ध्यान लगता है भजन में, सत्संग में, ये थोड़ा सात्विक माइंड होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रजस और तमस खत्म हो गया है, परसेंटेज कम हो जाता है। इवन अ साधु, दे हैव ऑल थ्री क्वालिटीज, बट उनमें तमस और रजस का कम होता है, सत्व का ज्यादा प्रधानता होती है। ठीक है, तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है किरण? नहीं तो गुरिंदर जी से पूछते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ, आपकी प्रवृत्ति क्या है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है, जो 20s में ही आके, मेरा एक डिस्टेंट कजन था, ही वेंट बिकम अ साधु, ही नेवर केम बैक एंड ही इवेंचुअली डाइड यंग, है ना। उसका वही मार्ग था। तो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग अगर साधु बन गए, ऋषिकेश चले गए, बाद में उनको मिस करते हैं, गुलाब जामुन मिस हो रहा है, आई एम मिसिंग न्यू ईयर्स पार्टी। वैसा नहीं होना चाहिए। देन यू कम बैक एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ एज अ गृहस्थ। फिर वो ढोंग छोड़ देना चाहिए, प्रिटेंस छोड़ देना चाहिए। रहो गृहस्थ जीवन में भी, उसमें भी तरीका है करने का, टू एग्जॉस्ट योर टेंडेंसी। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बट प्रिटेंस में नहीं रहना है। तो उसी तरह गृहस्थ में अगर आप प्रिटेंस कर रहे हो, जबरदस्ती रुके हो, यू रियली वांट टू गो बिकॉज बट योर पेरेंट्स आर नॉट लेटिंग यू गो, दैट इज ओनली क्रिएटिंग मेंटल हेल्थ डिजीज फॉर एवरीबॉडी। तो इवन इफ योर फैमिली मेंबर्स इज शोइंग सच टेंडेंसीज, यू शुड लेट देम शो देयर टेंडेंसीज। अगर उनका जा रहा है तो उनको रोक के नहीं रखना है। तो संत व्यक्ति मन से होता है, जो गृहस्थ में भी हो सकता है और आश्रम में भी हो सकता है, डजंट मैटर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रूली व्हाट यू वांट एंड गो टू टेक दैट पाथ। ओके, कर्मयोग होता है, जैसे मैंने बोला 3 लेवल पे होता है, काया वाचा एंड मनसा। काया मीन्स थ्रू योर बॉडी यू डू कर्म, वाचा मीन्स थ्रू योर स्पीच, मनसा मीन्स थ्रू योर माइंड। तो एक भगवद गीता में एक टर्म आता है आर्जवम, जिसमें योर बॉडी, योर स्पीच एंड योर माइंड इज ऑल इंटीग्रेटेड। जो आप सोच रहे हो वही बोल रहे हो, वही कर रहे हो। दैट इज द फर्स्ट प्रैक्टिस, बेसिक एक्शंस। आप ऐसा नहीं कि सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो। मैं जब शुरू में हॉस्टल में गई थी यहाँ पे विनिपेग में, तो हमारे यहाँ एक ऊपर कपल रहते थे, इंडियन कपल। तो विनिपेग में ऐसे ही कम इंडियन पॉपुलेशन थी और स्टूडेंट इसमें तो और भी कम थी, और वो भी मैरिड कपल कम ही थे। जब भी सीढ़ी पे आते जाते ना बोलते थे आ जाओ कभी, आ जाओ अपार्टमेंट। मैंने बोला बुलाओ तो कभी, तब तो आएंगे। ये आ जाओ क्या है। एक दिन मैंने बोल दिया भैया आप कभी बुलाओ तो स्पेसिफिक डे, हम आ जाएंगे। आते जाते आ जाओ हमारे यहाँ। फिर एक मेरी फ्रेंड बोलती है यहाँ तो किसी को बुलाना ही आफत लगता है, घर साफ करो, खाना बनाओ। मतलब लोगों के पास इतनी भी एनर्जी नहीं रहती है, बोलते हैं आ जाओ, बट दे डोंट हैव एनर्जी टू एक्चुअली गो टू द ग्राउंड लेवल एंड वर्क। कितने लोग की एनर्जी रहती है ग्राउंड लेवल पे? सब रोते ही रहते हैं ना। अगर पॉलिटिशियन पे भी कोई रो रहा है, आप में एनर्जी है पॉलिटिशियन बनने की, बनो। इफ यू कीप क्राइंग अबाउट समथिंग, तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज कॉल्ड आर्जवम। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। ओके, इट शोज योर अलाइनमेंट बिटवीन योर माइंड, बॉडी एंड स्पीच। तो अगर कुछ गलत मुंह से निकल रहा है ना, और मन ने मतलब पता है कि मेरा बोलना इज नॉट यूजफुल, मुंह बंद रखो, उसमें साइलेंस, प्रैक्टिस साइलेंस, unless it's causing some harm. Your remaining in silence causes harm also sometimes, है ना। जब कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं और अब बोलेंगे नहीं, तो that's causing more harm, right? तो आर्जवम हमेशा अपने माइंड में रखना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ अ कर्मयोगी, है ना, प्रैक्टिस करना है। तो कर्मयोगी में सबसे पहला है स्वधर्म अनुष्ठान, मतलब अपना स्वधर्म पूरी
निष्ठा से उसका पालन करना है। स्वधर्म मतलब माय बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। तो पहला क्या है? हाँ, take care of yourself, because if you don't take care of self, you are going to become a burden on others physically and mentally. ठीक है? तो स्वधर्म ना सबसे पहले अपना, फिर एज अ ड्यूटी ऑफ वट एवर रोल लाइफ हैज गिवन यू, एज अ मदर, एज अ हाउस होल्डर। और मैंने गृहस्थ जीवन पे 2 वीडियो बनाया था, सबने देखा दोनों वीडियो कि नहीं देखा? देख लिया? सेकेंड वाला ड्यूटीज ऑफ अ हाउस होल्डर, ओके प्लीज देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट वॉच इट। ओके, मैं फिर से लिंक भेजती हूँ, उसको रीशेयर करती हूँ। स्वधर्म अनुष्ठान, क्योंकि यू डोंट ओनली हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हाउस होल्डर विद इन योर हाउस, जैसे मैंने बोला वसुधैव कुटुंबकम। तो एज अ गृहस्थ, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पीपल यू आर इंटरैक्टिंग विद इन योर ऑफिस, योर कॉलीग्स, योर फ्रेंड सर्कल, एनीवेयर, रास्ते पे आते जाते कम्युनिटी, यू नो, everywhere you have to keep that hat of a grihast yogi sort of, कि क्या यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, are you able to openly say things or try to transform things or not? तो उसका ध्यान रखना है, कुछ गलत हो रहा है, am I speaking for me, am I in a position to speak for it? मैं अपने ऑफिस में बहुत कुछ कुछ हो रहा था, बोलती हूँ, कई बार ट्राई करती हूँ बोलने का, कई बार होता है कई बार नहीं होता है, बट मैं बोल देती हूँ, अच्छे से ही बोलती हूँ, झगड़ा नहीं करती हूँ किसी से लेकिन मैं ट्राई करती हूँ बोल दूँ कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है जिस तरह हो रहा है, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला सुन सकता है, अगर सामने वाला बिल्कुल भी रॉक फेस है तो फिर आई जस्ट विड्रॉ। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन देख के बोलो, है ना, बट अगर बोल सकते हो तो यू मस्ट स्पीक आउट, तो वो इम्पोर्टेंट है बोलना। ठीक है, सेकंड होता है शरणागति। शरणागति मतलब फुल सरेंडर इनटू अ हायर पावर, कि आप अपना कर्म आपके हाथ में है, जो भगवत गीता फेमस श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वर्स 47 ऑफ चैप्टर 2। तो उसमें है कि आप कर्म करो, बट उसका जो फल आता है वो डिपेंड नहीं करता है आपके इंटेंशन पे और या एक्शन पे भी, वो चाहे तो आपको अच्छा फल देगा या बुरा भी दे सकता है, समथिंग लेस देन यू एक्सपेक्टेड, और इट कैन बी मिश्रित, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, वी डोंट नो, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, एनर्जीज वर्किंग टुगेदर, योर पास्ट कर्मा, या वो भी फैक्टर होता है। तो कई बार देखते हैं हम लाइफ में कि कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें गिव अप नहीं करना है, मे बी यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज। जैसे हम बहुत सारे जॉब्स ट्राई करते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो उस केस में कई बार मे बी आवर रिज्यूम इज नॉट दैट गुड, और हमारे कोर्सेज, तो अपने आप को देखो, लुक विद इन व्हाट आई हैव टू इम्प्रोवाइज, लेकिन कीप डिपेंडिंग कि अरे हर जगह से मुझे रिजेक्शन मिलता है तो मतलब उसमें दुखी हो जाएंगे, तो दैट इज नॉट अ पाथ टुवर्ड्स कर्म योगा। तो प्रसाद भाव रखना है, मतलब वट एवर रिजल्ट इज कमिंग, टेक इट एज अ प्रसाद एंड वर्क विद अ हायर विगर, कि मुझे और इस पे वर्क करना है। ओके, बिकॉज समटाइम्स यू मे बी वर्किंग रियली रियली हार्ड, बट कई बार ऐसा लगता है कि सब एवरीथिंग इज कमिंग बैक ऑन यू, नथिंग इज वर्किंग। उस समय क्या करना है, मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ से अपनी साधना को तीव्र कर देनी है, क्योंकि नथिंग इज वर्किंग, लुक विद इन व्हाट यू कैन डू मटीरियलिस्टिकली भी, क्या मैं कोर्सेज करूँ, कैसे अपने आप को करियर वाइज इंप्रूव करूँ, या जैसे इंप्रूव करना है पर्सनालिटी वाइज इंप्रूव करना है, और अंदर भी साधना और मंत्र जाप और प्राणायाम और योगा, उसमें डूबते चले जाओ, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, तो इसमें इसमें जो बोला गया है, सर्व प्रसाद भाव, जो पूरी तरह से सोचते हैं ना, उनमें भय नहीं होता, दे बिकम वेरी फियरलेस, उनको किसी चीज का भय नहीं होता, कि कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, मैंने काम तो अपना किया ना अच्छे से। क्या बात, गायत्री स्माइलिंग That's what I'm doing these days, Ah. even at work. Yeah. अभयम, Yeah. वेरी गुड वेरी गुड। तो निर्भय हो जाते हैं, 4 न है, हाँ, निर्भय, निश्चिंतता, निशोक एंड निसंशय। निर्भय तो हो गया फियरलेस, है ना, निश्चिंत मतलब चिंता रहित, निश्चिंत, चिंता ही नहीं होती कोई भी चीज की। निशोक मतलब दुख नहीं होता, जो आना है आएगा, जो नहीं आना है नहीं आएगा। ओके, तो तीसरा निसंशय मतलब भगवान के विधान में संशय नहीं होता, मतलब विधान मतलब प्रोसेस, एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है कॉस्मिक इंटेलिजेंस का, ऐसा सोच के रखते हैं हम लोग, जो ईश्वर का चल रहा है सारा कुछ, जैसे सुनामी आया, कोविड आया, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। ईश्वर इज व्हाट, ईश्वर इज द लॉ ऑफ नेचर, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसमें उनका, जैसे हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है पॉलिटिकल लाइफ में, या लोग ऐसा आजकल बहुत फाइट कर रहे हैं, भगवान का उससे बड़ा प्लान रहता है, सोच लो। बिकॉज वो समष्टि को सब पता है, दैट इंटेलिजेंस नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एंड वो सारे कर्म फल के तहत ही हो रहा है।
उसके लॉ के विदिन ही हो रहा है। कर्म का जो सिद्धांत है ना, द लॉ ऑफ कर्मा, इतना पावरफुल है। इफ यू रियली इम्बाइब इट, then you really become fearless, because then only you have to work on yourself, your karmas, right? Arjavam, alignment. Then you really don't care क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, and everywhere you'll be useful to the world. Okay? फिर आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन? Later. ठीक है। टाइम का ध्यान रखना कोई, मैं तो शुरू होती हूँ तो बंद ही नहीं। हाउ लॉन्ग शुड वी गो ऑन? 6:30? या देखती हूँ मेरे पास कितना नोट्स। ओके, ये हुआ तो पहले साधना का पहला विंग है कर्मयोग। उसमें ये सब कॉन्सेप्ट समझना था, इसलिए मैंने बताया। अभी हमने कर्मयोग शुरू ही नहीं किया एक्चुअली, है ना, बस मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल लर्न एवरीथिंग। सो उपासना के अंग होते हैं, तो पहला अंग है कर्मयोग, सेकंड अंग है उपासना। उपासना मतलब साधना के अंग होते हैं, तो पहला कर्मयोग है, सेकंड है उपासना। उपासना का रूट वर्ड क्या है, किसी को पता है? रूट वर्ड मतलब मीनिंग क्या होता है उसका? हाँ, उपासना में आसन है। हाँ, सिट नियर मी एंड डू समथिंग। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे पास बैठो, भगवान या सेल्फ जो भी है ना। उपासना मतलब होता है नाम जप करो, रूप पढ़ो, जैसे बुक पढ़ रहे हो आप, है ना, विवेकानंद की बुक पढ़ो, लीला का चिंतन करो, है ना। भगवान ने ऐसा किया था, जब बचपन में हम स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, वो भी उपासना है ना। बच्चों को महाभारत, छोटे छोटे जो पुराण के स्टोरीज होते हैं वो सुनाते हैं। मेरा तो फेवरेट है अमर चित्र कथा, मेरे बच्चे पूरा एकदम घोल के पी गए हैं उसको। इतने बार पढ़ चुके हैं। फिर उपासना धाम विजिट, गोइंग टू धाम्स लाइक डिफरेंट मंदिर या तीर्थ स्थल इज ऑल्सो उपासना। अब लोग उपासना को ना भक्ति से कंफ्यूज कर देते हैं। भक्ति इज नॉट उपासना। उपासना इज फिजिकल एक्शंस, क्रिया है। प्राणायाम, मेडिटेशन सब उपासना के अंदर आता है। भक्ति समथिंग हैपेंस टू द माइंड विच इज कॉल्ड लव। ओके, भक्ति का आधार प्रेम होता है। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, वो प्रेम एक क्रिया नहीं है, वो एक मेंटल फैकल्टी का ये है, राइट? तो भक्ति और उपासना सेम नहीं है। अब इसी में मैं रिलीजन की बात करूंगी, तो रिलीजन का कोई संस्कृत, हिंदी या पंजाबी या कोई भी इंग्लिश, हिंदी, इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीजन का कोई वर्ड नहीं है। ओके, हमारे इसमें क्या है? धर्म है, उपासना है। तो लोग उपासना को ही रिलीजियस एक्टिविटी समझ लेते हैं, है ना, विच इज रॉन्ग। उपासना इज अ साधना, इट्स फॉर योर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, एवरीथिंग टेक्स यू टुवर्ड्स भक्ति। कर्म योगी सारा भक्ति योग जो बोलते हैं, वैसा, और कर्म योग दोनों में एक्चुअली हायर लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, भक्ति योग एंड कर्म योग या ध्यान योग, ज्ञान योग सब एक ही है। ऊपर के लेवल पे, नीचे शुरू होता है कर्म से ही, और भक्ति धीरे धीरे, भक्ति मतलब प्रेम होता है। मोर यू नो भगवान, मोर यू नो समबडी, यू कैन लव देम, राइट? इफ यू डोंट नो समबडी, हाउ कैन यू लव देम? तो हमारे ऋषियों ने कभी नहीं बोला भगवान को मानो, उन्होंने बोला भगवान को जानो। भगवान के पास कैसे पास जाएंगे? उपासना, कर्मयोग, ये सब होता है। फिर नेक्स्ट 3 अंग होता है साधना के, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ओके, तो कर्मयोग इज द ग्रॉसेस्ट लेवल, इट टीचेस यू थ्रू योर लाइफ how you're doing everything is karma yoga. Then upasana is that specific time that you spend every day is upasana, which is very important. 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट से ही शुरू करो, अगर नहीं होता 10 मिनट तो, बट डू सम उपासना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण इज लिसनिंग, लाइक you're listening this and then listening to all the teachings, भगवत गीता के, उपनिषद के, शास्त्र के टीचिंग को श्रवण बोलते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुरु ने बोला सत्संग, जो हम कर रहे हैं, है ना, ये अब मैं लकी बंच प्रॉब्ली। एंड देन मनन इज जो सत्संग में सुना है ना, उसको सोचना है। यस, उसको अच्छे से सोचना है। उस पे मनन मतलब होता है कम बैक एंड आस्क डाउट्स। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो लगा कुछ समझ ही नहीं आया। तो क्वेश्चन, डाउट्स क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स क्रिएट करके आना है, हाँ, क्वेश्चन। निधिध्यासन इज अ वेदांतिक कंटेम्पलेशन। निधिध्यासन मतलब डीप कंटेम्पलेशन ऑन आइदर महावाक्यज और सम डीप स्टेटमेंट फ्रॉम भगवत गीता। उस पे बस ध्यान करना, सोचना, दिन भर उसी के बारे में सोचते रहना। एक श्लोक पढ़ा, उसके बारे में सोचते रहना, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करना इज निधिध्यासन। इट्स नॉट नॉर्मल मेडिटेशन, इट्स कंटेम्पलेशन। ओके, यू आस्क क्वेश्चन विद इन योर ओन सेल्फ, अच्छा ये लिखा है तो ये मीनिंग होगा, फिर मैंने क्या सुना, सबको एसिमुलेट करना निधिध्यासन है। तो ये 5 अंग हैं साधना के। पहला
पहला क्या अंग है? कर्मयोग। सेकंड उपासना। आंसर तुम ही दे दोगे। टीचर को अलाउड नहीं है बोलना। पहला है कर्मयोग, सेकंड है उपासना, थर्ड है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो ये साधना के 5 अंग हैं। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ऑनलाइन किसी को कुछ क्वेश्चन है? So religion is just an English word for whatever. रिलीजन का रूट वर्ड होता है रेलिगारे, लैटिन में। उसका मतलब होता है टू बाइंड। तो रिलीजन वाज समथिंग टू बाइंड पीपल टुगेदर एंड डू समथिंग टुगेदर, विच कैन बी थॉट ऑफ उपासना, ऑफ अ हायर थिंग, है ना। बट हमारा इससे ज्यादा बियॉन्ड जाता है, कर्मयोग से लेके निधिध्यासन तक जाता है। वहां पे बोलते हैं कि ये हायर है, इसको बिलीव करो। बिलीवर और नॉन बिलीवर में इब्राहिमिक रिलीजन बटा हुआ है ना, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। हमारे इसमें तो बिलीव का प्रश्न ही नहीं उठता। डू यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव अ नोज ऑन योर फेस, और यू नो यू हैव अ नोज ऑन योर फेस। तो हमारे इसमें ऋषियों ने हमेशा नॉलेज पे एम्फेसिस किया, बिलीफ पे नहीं। बिलीफ या फेथ में भी अ फर्स्ट स्टेप, तभी आप आते हो। जैसे आप बिलीव कर रहे हो कि मैं कुछ बताने वाली हूँ, या किसी के मोक्षधाम में कुछ हो रहा है, बिलीव करके, या किसी के बात सुन के आते हो, दैट इज द बेसिक फर्स्ट स्टेप। बट वी डोंट स्टॉप देयर, वी गो टुवर्ड्स नॉलेज, टू नोइंग आवरसेल्व्स। तो ये डिफरेंस होता है इब्राहिमिक रिलीजन में और ब्रह्मिक रिलीजन में। वी बिलीव इन ब्रह्म, बिलीव मतलब वी वांट टू रीच देयर। ओके, तो दोज हु डोंट बिलीव इन ब्रह्म दे आर इब्राहिम, अब्रह्मा। वहीं से वो वर्ड आया, ब्राह्मिक रिलीजन। क्लियर? कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। मोर क्वेश्चंस? Just have a comment. I think that you had asked about bhakti. So bhakti, I think, is the result of upasana, because to your point of, Bhagwan Jano, this goes back. I was thinking about when we were talking about japa last time. How do you start doing upasana, or trying to get to know a form or anything that maybe you've never known before? After a while, the more you know, you fall in love. Yes. That, like It's we would with human being, like the more you get to do, because that is true. Archanaji, amazingly, what you said was the mind shifts. That is the beauty of upasana. When you do it, after a certain point, you realize that everything in your life can keep changing. But when you sit on that mat and when you do that upasana, everything is the same. Yeah. No matter what is happening around, those 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, that relationship you have with the deity or Brahman or whoever, I think that bhakti comes, which I think you've asked a very beautiful question. I thought it was amazing. Yeah. Upasana is like dating with Bhagwan. Huh? It's like dating with Bhagwan. You sit with that Bhagwan every day. I want to know you. I want to know you. And we use an image. It is such a powerful tool. Image is like a road map. ठीक है, you use that to reach somewhere. अब रोड मैप भी हमारे पास होता है तो हम रोड मैप को थोड़ी ना पढ़ते रहते हैं हमेशा. वी हैव टू रीच समवेयर. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए ना. वही उपासना है. उपासना, कम नियर मी, सिट एंड देन यू विल नो मी. तो ये सब मेथोडोलॉजीज दिया हुआ है. एंड देन वंस भक्ति का जब रंग चढ़ने लगता है ना, नथिंग लाइक इट. लाइक यू, हाउ यू फॉल इन लव समबडी, यू फॉल इन लव विद ईश्वर. ईश्वर कौन है? समष्टि है, द यूनिवर्सल एनर्जी. जो वही आपका फ्रेंड बन गया, मित्र बन गया, प्रेमी बन गया, तो किसकी और क्या जरूरत है? I have a long way to know all these terminology. मुझे तो कुछ भी इतना पता ही नहीं है भक्ति योगा के बारे में भी, कर्म योगा, भक्ति योगा. हठ योगा में इतनी एक्सपर्ट हो, हम लोग क्या करें? वो हम वही. नहीं कर सकते. सो वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीबॉडी ना, तभी मोक्षधाम Yes, बड़ा होगा. हाँ, भक्ति योगा is okay, वो हो रहा है, but yeah, I need to know all of सब these लोग सब things. चीज में एक्सपर्ट नहीं होते रहते. तो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो उसमें आगे बढ़ते जाओ, वही तुमको लेके जाएगा, वही तुमको कर्मयोगी बना देगा. आई एम टेलिंग यू. टेक Okay. वन थिंग, इट्स लाइक अ लेग ऑफ अ चेयर. एक भी चेयर पकड़ेंगे तो सब पूरा चेयर आ जाएगा ना हमारे पास. एक भी लेग पकड़ेंगे तो हाँ, true, बस true, जो true. तुम्हारा एक्सपर्टीज है उसको पकड़ो. लैक नहीं देखना है, क्या है वो देखना है. ठीक है? Okay, okay. क्या देवी से कम थी आज के पोज में? सब बोल रहे हैं. बिल्कुल, मैं तो देख के हैरान कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है. सो होल्ड अब ऑन. मुझे भी अपना वीडियो. अब उसको वापस अपने वीडियो देखने पड़ेंगे. नो, कीप डूइंग व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट. इसलिए मैं तो नहीं कर सकती, तो मैं जो आ रहा है वही करती हूँ. पढ़ाई करना आता है मुझे.
मैं दो नो 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 प्रोफेसर की नो, बेटी हूँ। आपके साथ हम भी पकड़ के निकल जाएंगे आपका हाथ। और हम तुम्हारे साथ पकड़ के सीख लेंगे कुछ आसन। हमारा भी भला हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। हैव अ गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू Thank you so much. so much, have a great evening, बाय। enjoy.